Yes, that is no issues. Application came through CAA Portal 2019 amendment. Mr. Brendan Valentin Crasso is a by birth Pakistani citizen. He came to Goa maybe a 6 months baby along with his parents, and the committee, district level committees and state level committees verified his antecedents and everything, and is a legal migrant. He got a Pakistan passport when he came to India, and the committee decided to grant the citizenship under the Citizenship Amendment Act 2019. This is the third application in Goa. He belongs to Roman Catholic and lives in Anjuna Beach. His grandparents are from Goa and they have the property. He is staying in their property. And he married a Indian Goan female. So by that way he could apply for this Citizenship Amendment Act for citizenship. The committee decided and granted the citizenship. I request Honorable Chief Minister Sir to present the citizenship certificate today. For you. Some actually like it. There you go. You can stand. So. Yes. Congratulations. Yeah. So, ulay tu. I'm very thankful to this CAA and Goa government, NCA, and the central government giving me the citizenship. Waited for a long time. Came in 1981, and after 44 years I've got the citizenship. Very grateful to all. Thank you. Mr. Brandon, good afternoon. Under CAA Citizen Amendment Act, गोंय सरकारच्या वतीन आमी तिसरी सिटीजनशीप आयज मिस्टर ब्रँडन वेलेंटो क्रेस्टो ओरिजिनली पाकिस्तान नागरीक हाका दिता. आमी पळयता आसतना एज अ मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका खोस भोगता. मिस्टर ब्रँडन हो ताजे एन्सिस्टर्स ताजे ग्रँडपेरंट्स हे दोनूय अंजुनाचे गोंयकार 1947 लिबरेशन भारत देश स्वतंत्र जावच्या पयलीं ते पाकिस्तानाक शिफ्ट जाल्ले आनी पाकिस्तानाक शिफ्ट जाल्या उपरांत तांची प्रॉपर्टी आनी तेजी हांगासर आशिल्ली. ब्रँडनाचे पेरंट्स पाकिस्तानच्यान 1981 गोंयांत आयले आनी गोंयांत येवन ते स्वताच्या प्रॉपर्टींत रावपाक लागले. ओरिजिनली आशिल्लो आमचो गोंयकार जो भारत देशाच्या फाळणीच्या पयलीं थंयसर गेलो, कारण आफ्टर ऑल पाकिस्तानी तेन्ना भारत देश आशिल्लो आनी तेका खऱ्या अर्थान म्हणजे परत हांगासर आयल्या उपरांत तेका सिटीजनशीपचे रायट्स मेळनाशिल्ले. म्हणून तर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी जो सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्ट हाडलो, त्या सिटीजन अमेंडमेंट ऍक्टाच्या अंतर्गत आज तेका देशाचे नागरिकत्व हे मेळटा ही ताच्या खातीर एक अभिमानाची गजाल आसा. आमी तेन्नाय म्हटलेले की जो पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश हांगासर आशिल्ले म्हणजे हिंदू, सीख, इसाई, कॅथलीक ही बाय रिलीजन ही रोमन कॅथलीक आनी ताका ही सिटीजनशीप दिता आसतना म्हाका
ताजी मिसेस आनी ताजी दोनूय भुरगीं ही सिटीजनशीप घेवपा खातीर हांगासर आयिल्ली. हांव परत एकदा गोंय सरकारच्या वतीन, भारत सरकारच्या वतीन ताजें खूब खूब अभिनंदन म्हणटा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जो CA एक्ट पास केलो, ह्या CA एक्टाक खूब जाणांनी विरोध केलो, पण आज आमी पळयता गोंयांत सुद्दां की खूब मोठ्या प्रमाणात आमच्या कॅथलीक भावांक ही सिटीजन अमेंडमेंटशीपच्या एक्टाच्या अंतर्गत ही सर्टिफिकेट मेळटा. म्हणून हांव ताजें अभिनंदन करता. आनी गोंयांत तिसरी सर्टिफिकेट ही आमी दिता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता. परत एकदा ताजें खूब खूब अभिनंदन. सर आनी एप्लिकेशन आहा तुमच्याकडे? आनी एप्लिकेशन आहा क्वेश्चन कितली पेंडिंग पेंडिंग? There is one more application is pending. Mr. Brandon Valentin Cresto, originally Pakistani citizen. At present, हमने उनको अभी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जो इंडियन सिटीजनशिप दी है, मैं गोवा सरकार की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ओरिजिनली उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो दोनों गोवा के अंजुना के थे, जो 1947 से पहले गोवा से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, और 1947 के बाद उनको यहाँ आने में तकलीफ रही. उनके जो पेरेंट्स हैं, जो ब्रैंडन थे, वो 1981 में उनको लेके गोवा में आ गए, और तब से लेके वो गोवा में ही रह रहा था. 44 साल ईयर के बाद उसको आज सिटीजन अमेंडमेंट सर्टिफिकेट मिली है. मैं गोवा सरकार की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ, और भारत सरकार की तरफ से भी उनका अभिनंदन करता हूँ. खास करके 44 ईयर के बाद इस तरह की सर्टिफिकेट मिलने वाला गोवा का ये तीसरा सिटीजन है. उनको CA के अंतर्गत उनको उनकी सिटीजन अमेंडमेंट सर्टिफिकेट उनको मिली है. मैं सही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने CA के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इनके लिए जो हिंदू, सिख, ईसाई जो लोग थे, उनके लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत उनको जो सिटीजनशिप देने का जो निर्णय लिया, उनका तभी भी हमने स्वागत किया था. तभी भी कहा था कि इसका फायदा बहुत सारे लोगों को हो जाएगा. अभी तक गोवा में 3 लोगों को मिला है और एक एप्लीकेशन पेंडिंग है. डेफिनेटली फिर एक बार मैं गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा के स्पेशली जो 3 लोगों की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे 3 सिटीजन को इंडियन सिटीजनशिप मिली है. इसलिए CA का फायदा गोवा में मिलने लगा है, इससे प्रूव हुआ है. फिर एक बार मिस्टर ब्रैंडन, बाय ओरिजिनली ही इज इन रोमन कैथलिक, ओके, उनको आज सिटीजनशिप मिली है. उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. पोर्टफोलिओचे कितें आयज डिसायड जातलें म्हणटाले. सेम दिसता रोडाचो विशय कोणाच्या रोडाचो? रोड बंद करपाचो. परवरीचो रोड चवथ जायसर बंद जावचो ना. चवथीच्या 5 दिसांच्या उपरांत ताजेर व्यवस्थीत प्लॅनिंग करून डिसिजन घेतला. हांवें इन्स्ट्रक्शन दिला. उरलेले पॉटहोल्स काडपाकूय हांवें सांगलां, कारण पावस चडूच आशिल्लो म्हणून परत परत पॉटहोल जाता तेय काडपाक लायले. गोंयभरच्या रस्त्याचे पॉटहोल्स ह्या 2 दिसांक मेजर मोठ्या प्रमाणात काडटले. सेम हावजान तुम्ही म्हटलेले की चवथीचो बाजार ऑलरेडी नोटिफिकेशन इश्यू जालें तें. पूण सोंपो घेवपाचें नोटिफिकेशन तेंच्या कडेन पावलां. त्या खातीर तेंच्यांनी नोटिफिकेशनाचो कन्सिडर करून तांच्यांनी गोवन बाटोळी हे करपी आपले तेंच्या कडेन सोंपो घेवचो न्ही. नोटिफिकेशन ऑलरेडी आयज तेंच्यांनी पावता, थोडेशे डिले जातले. शेनवार आयतार आशिल्लो. Any update, sir? Sir, portfolio. Sir, portfolio. कितें सांचे आपले व्यक्तिगत